we've been given the artist task of looking at child-centric education or a child-centric model. What we will do through our discussion and question and answer, we'll try to figure out, does child-centric education really exist? If yes, how so? If not, what can we do to bring it to the fore? And through the discussion, we'll find out what are the ripple effects of child-centric education. With your permission, and if I may start my question with you, sir, is now this child-centric education has been around for a very long time. 1986, the NPT at that point in time was talking about autonomy and innovation and for teachers and students. Do you really feel that our country and our education system is child-centric? I would love to hear your thoughts. Thanks. According to me, our today's education system is not child-centric education system. We are trying to go towards that, but मैं एक बात कहूँगा आपको, बनाने वाले तूने कमी ना की, मगर किसको क्या मिला है मुकद्दर की बात है। बनाने वालों ने काफी कोशिश की है, एजुकेशन सिस्टम पॉलिसीज बनाई है, एजुकेशन नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, उससे पहले आई है, बट जो मिलना चाहिए, लिसन, टीचर्स आर फॉर स्टूडेंट्स, टेक्नोलॉजी इज फॉर स्टूडेंट्स, coaches are for the students, school is for the students, student is not for these. Fine, but हो क्या रहा है, स्टूडेंट पे सब कुछ डाल दिया जा रहा है कि ये तेरा करिकुलम है, ये तेरा सिस्टम है, you have to follow this and that, these are the rules and regulations, you have to go through this. अगर ये नहीं कर रहे हो तो आपके जैसे स्पोर्ट्समैन के लिए 75% बैलेंस होना चाहिए, ये होना, हम ये नहीं करते, बच्चा क्या चाहता है, बच्चे को प्रैक्टिकल एजुकेशन चाहिए. Why we people are lagging behind other foreign countries? Because our education system is not student-centric education system. हम बच्चे को engage नहीं कर पा रहे हैं और लॉकडाउन में हम सब स्कूल्स वालों ने देखा है, जो भी स्कूल एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड है, अगर टेक्नोलॉजी ना होती तो शायद हमारे स्कूल ना हो. 2 साल में काफी स्कूल्स को ताला लग चुका है, बाकी को भी लग जाता है, टेक्नोलॉजी बिल्कुल ना होगी तो. टेक्नोलॉजी जरूरी है, बट टेक्नोलॉजी ही सब कुछ नहीं है. मतलब वन वे कम्युनिकेशन शुड नॉट बी देयर, चाहे वो टीचर का हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी का हो, चाहे वो कोचेस का हो, चाहे स्कूल सिस्टम का. हमारे स्कूल में देश हमें बच्चे पे सेंट्रलाइज करना है और बच्चे को फोकस करना है कि बच्चा कहाँ जा रहा है, बच्चे में को कहाँ एंगेज कर सकते हैं, उसकी पेस क्या है लर्निंग की. वी हैव टू फोकस ऑन दैट. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग व्यू सर. हमने कभी जानने की कोशिश नहीं की कि बच्चे को क्या चाहिए. जब हम बच्चे थे किसी ने जानने की कोशिश नहीं की कि हमें क्या चाहिए. हम टीचर बने, हमने जानने की कोशिश नहीं की बच्चों को क्या चाहिए. एंड दैट इज द पर्टिनेंट पॉइंट about child-centric education. Sir, Dr. Ruth, if I may then take this question forward to you. We're talking about child-centric education, and sir has very importantly pointed out student agency. Now, do you really feel, if you look at the definition of student agency, we are looking at the student having a voice and a choice. Do you really feel that we as a country, we as an education system, are ready for such a big change? Both in our infrastructure, in our thinking, in our teachers, in our resources. Over to you, sir. Good evening, everybody. Before even I start answering this question, are we ready to do it or not? I would like to modify it a bit. Whether student-centric education is essential, and if yes, to what extent? We have to agree that education, teaching somebody, is such a complex issue. There cannot be one golden solution. Right? This is like one of the big problems of the world, right? Not just India, throughout the world. You compete with problems like pollution around the country, around the globe. Now, there is no doubt that student-centric education would lead to children with independent critical thinking, and it will really enhance their life skills. However, I have a strong belief that this cannot be the only mode of teaching. Right? I'll give you an example. If you talk about concepts which are long and written, I'm a person of science.
my thought process also goes there. There are so many concepts that you start teaching in class 8 onwards, which are very non-intuitive. I mean, children, if they try to learn it on their own, right, hands-on, their intuition will lead to wrong answers. One thing, I should ask everybody in the audience, so if I start rolling something, right, everybody moves in card, right, so rolling should be very straightforward. Can someone tell me if friction is acting when rolling is happening? Is friction necessary? And when an object starts rolling, is friction playing a role or not? Does anybody know this here? So, anyways, friction is important to start rolling motion, but once an object is rolling, friction does not act. This is such a it is an everyday thing. Rolling defines the world, right? Without rolling, you don't have a gas system, you don't have cars, nothing, right? And it is such a non-intuitive concept. Now, if you try to teach this concept from a student-centric point of view, where the student does experiments or does experiential learning, he will come to a wrong conclusion. So, I think that a blended mode of learning should be encouraged, wherein you both have student-centric learning as well as teacher-centric learning, and a lot of effort needs to be put in the lesson plans when dependent on the course that has to be taught, the time constraints that we have. That's a real practical problem, the time constraints that we have, and the final learning objectives of the content. We've been trying to do some student-centric learning in our school, and I believe that not more than 4 or 5 topics are practically viable for a subject per year that can be really taught through student-centric learning. But I think that should be enough, because that will develop, the main objective of independent thinkers, critical thinkers, and having good communication skills, interaction skills. This should be enough for children to develop those processes and make them learn on their own when they come across. And information today is available all the time, everywhere. Okay? And once they have these basic things, they can learn. So this whole school system does not need to change. Some of it has to change, right? There needs to be moderation. You can't go from one extreme to another. Thank you so much, sir. I think the pertinent point, the very relevant one that really came across is while we look at bringing about child-centric education, it should not come as a shock to us. It should trickle in, and we should keep the environment ready for us to bring about child-centric education. I think it's a very wonderful point and very beautifully put. If I can extend that conversation to you, ma'am, is when we're looking at child-centric education, how sir said, you write lesson plans, and your lesson plans therefore lead into a lot of discussion. Discussion goes into collaboration. Collaboration goes into what the child can do, not only in school, but also at home. Now, when you are having collaboration in class, the class is not as quiet as this place. The class is noisy. Now, an active, noisy class isn't misconstrued as a disciplinary issue, or for a child-centric education system, the class is expected to be bubbly and vivacious and full of energy. What are your thoughts on that? Good evening, everyone. I'm BATHINDA, Principal of Delhi World Public School, Moga. So, this topic is very close to my heart, that is child-centric education. So, when he said that it is a noisy class, to be very honest, right from the beginning when I became a teacher also, I always loved a noisy class. I always wanted the interaction to happen. It should be more of students than teacher interaction, because if the students will speak more, the learning will happen. Otherwise, only whatever a teacher wants to put it into the minds of the children will go into their minds, and what exactly the learning atmosphere should be there, it seems to be missing. So coming up to the discipline
discipline point, yes, the child-centered education, aims at positive discipline. So when we design the rules of discipline in such a classroom, we should not forget about the dignity and the individuality of a child. That should not be that should never be disrespected. They do hold the same respect as we. We should never ever try to belittle them. That is my opinion. And for that, I believe, being the leaders, we need to train our teachers. They are the ones who can bring in the positivity in the classroom by boosting up their morale. Not only that, even the parents have to be educated, because somewhere the negativity starts from the home when the parents say that you cannot do anything. So we have to overcome all these things, and we being the leaders have a greater role in educating everybody to have the child-centric education atmosphere. Thank you. Thank you, ma'am. The point that I got very aptly is that for child-centric education to happen, while we look at collaboration and the discipline issues and discipline issues should be tackled very differently, child-centric education is not only in school. The home must be actively involved in child-centric education, otherwise the entire system will fail. If home and school are both taken into consideration, ma'am, my next question is to you. How do you see blended education supporting child-centric education? I mean, it's doing its rounds right now. It's pretty much a buzzword. Everybody's talking about blended education, hybrid education, and many more. Do you really see blended education as a very strong tool for child-centric education, or the child-centric model of teaching and learning? Thank you so much for the question, first of all. Good evening to all. Yes, of course, blended education is the only solution, because we cannot go with any kind of rigid thing. Like the other sessions, in the other sessions also it is already mentioned that technology, student, parents are also an integral part of an education system. We cannot hide them, because without parent there is no education system. Because when the child came to us for the admission, first of all we see and we picturize the parent figure. कैसे पेरेंट्स आए हैं, अब कैसे पेरेंट्स से मीन्स उनके बैकग्राउंड से नहीं होता है. जब आप पेरेंट्स से बात करते हैं आज के एरा में, बिकॉज वी ऑल आर पेरेंट्स, हमारे बच्चे हैं सभी हैं, और हम लोग स्कूल में जब अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और हम बोलते हैं तो पहले हम ये सोचते हैं कि अच्छा ये जो एजुकेशन सिस्टम हमसे डिमांड कर रहा है, क्या ये स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहा है. आज जो हम बोलते हैं स्टूडेंट सेंटर टीचिंग मॉडल्स, एग्जैक्टली हमारी जब से पॉलिसीज बननी शुरू हुई हैं, फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट इट इज ऑलवेज मेंशन चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन, child centered education. B.Ed courses, everywhere it is mentioned for the teachers, when teachers are doing B.Ed courses or any diploma courses or any DLED or any course, it is only mentioned child centered education, child centered education. But I think or I believe child, parent, school, the management included, whether it is a principal or anybody else who is looking after the school, they all three are in a circular form. Like we are studying in economics, that economy cannot be built with only one tool. There are so many tools needed for that. So एक बच्चे को हम बात करते हैं all round development. Every parent needs कि all round development होना चाहिए बच्चे का. तो जब तक हम blend नहीं करेंगे, तब तक हमको all round development नहीं मिलेगा. Scholastic and non-scholastic, both the things are very much needed, and each and everything is needed. Like technology, अभी इससे पहले मैम ने बोला, सर ने बोला शायद, हाँ, कि टेक्नोलॉजी टीचर को कभी रिमूव नहीं कर पाएगी. इट्स ट्रू. आपने जो ऐप हमें बताया, आपने जो इंट्रोडक्शन हमें दिए, दे आर वेरी गुड, ऑफ कोर्स, बट देयर आल्सो अ टीचर इज नीडेड. विदाउट टीचर these things cannot be inculcated in a child behavior or in his or her mind, and until the teacher will explain the thing. जब एक बच्चे स्माइलिंग फेस देखता है मॉर्निंग में और वो जो स्क्रीन पढ़ता है, दोनों का
कॉम्बिनेशन प्लान होता है, तो दैट वाज द परफेक्ट ब्लेंडेड emotion and expression and feeling and result output whatever we are getting in a classroom. So both the things are necessary. Thank you so much. Thank you, ma'am. I think you've given a very different and interesting take on blended learning. I'm going to take this with me to all the sessions that I go to. Sir, you wanted to add something? I want to add something that I had an experiment in my school last week. तो टीचर्स कहते बच्चों को मेजरमेंट नहीं समझ आता, तो आई प्लान फायरलेस कुकिंग कॉम्पिटिशन in the school. I totally arranged the food मेला in the school. चार बच्चों का ग्रुप बनाया और उनको बोला गया कि तुम्हें जो कुछ भी बनाना है, यू आर वेरी फ्री टू मेक, बट आप मीडिया आएगा और आपसे कुछ भी पूछ सकता है, क्या क्वांटिटी है, कितना उसका मेजरमेंट है, आपका इवन जो टेबल आप जिस पे हो तो उसकी मेजरमेंट क्या है, एनीथिंग मीडिया कैन आस्क यू. और मीडिया किसको बनाया गया? स्टूडेंट्स में से ही कुछ बच्चों को मीडिया पर्सन्स बनाया. तो जिन बच्चों को जो हम कहते हैं पढ़ने में वीक है, जो इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, उसके लास्ट में जो रिजल्ट निकल के आया, मैंने वीक स्टूडेंट से पूछा कि बेटा ये कितना केजी है, इस केजी में कितने ग्राम है, ये कितना ग्राम आपने लिया, इसको इसके कैसे किया, तो सभी को ठीक है. टाइमिंग का मैंने पूछा कितने टाइम में आपने बनाया, कितना इसको सेकंड्स लगे आपको, बेटा कितने मिनट्स लगे, इसको अगर आलू को आप तुमने घर से उबाल के लेके आए हो तो कितनी देर में तुम्हारा आलू उबला. बिकॉज मतलब इस तरह के बिल्कुल बारीकियां क्वेश्चन पूछे. देखिए एक्सपेरिमेंटल लर्निंग एक्चुअली जो सिस्टम है, हमारे सिस्टम में थ्योरेटिकल बहुत कुछ है वैसे, लेकिन उसमें थ्योरेटिकली या प्रैक्टिकली भी आप लैकिंग. और एनालाइजिंग पावर जो है वो विश्व की सबसे बड़ी पावर है. एनालाइजिंग पावर, परखन शक्ति, गुरु ग्रंथ साहिब में भी लिखा हुआ परखन शक्ति सर्वोत्तम शक्ति. उस परखन शक्ति को तो हम सिखाते ही नहीं है हमारे सिस्टम में कि चीजों को परखना कैसे है, सही टाइम पे सही डिसीजन कैसे लेना है. तो ये एक्सपेरिमेंटल लर्निंग से ही पॉसिबल है. और अगर हम ये नहीं करते हैं तो हमारा बच्चा अगर सही वक्त पे, हम भी अपनी लाइफ में हमारा टोटली लाइफ चेंज हो जाती है. सही टाइम पे सही डिसीजन ना हो तो, और एक सही टाइम पे सही डिसीजन लाइफ चेंज कर सकता है. तो आई थिंक स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन हो और स्टूडेंट के बेस पे हो कि हर देखिए बनाने वाले ने हमारा जो अंगूठे का थंब इंप्रेशन भी सेम नहीं बनाया. इट्स यूनिक इन द वर्ल्ड. तो हाउ द यूनिक इफ thumb impression is unique, but our similar education system we can implement it on everybody. I don't think so. Everybody has a skill, everybody has an attitude, everybody has a talent. We are not schools, we are extraction centers. We are mines from where we can extract coal, we can extract gold, we can extract diamond. Okay. So this is exactly, sir, the right spirit of child-centric education. आपने जो किया was wonderful. So this is an example. हर साल मेरे स्कूल के from 4th standard to 10th standard बच्चे का हमारे भटिंडा में जो पुलिस स्टेशंस हैं, उन पुलिस स्टेशंस को लेटर जाता है एसएसपी की तरफ से कि एपी स्कूल के बच्चे आएंगे तो आपको ड्यूटीज लगती है बकायदा थानों में. तो मेरा बच्चा लॉकअप में बैठ के भी देखता है, एफआईआर रजिस्टर्स भी देखता है, पुलिस इंस्पेक्टर से एसएचओ से भी बात करता है, आईओ से भी बात करता है. सेम वो हॉस्पिटल्स में भी जाता है, हॉस्पिटल में वेंटिलेटर 5th क्लास का बच्चा ऑपरेट कर लेता है. ठीक है, क्योंकि मेरा अपना ये है कि बच्चे को प्रैक्टिकल एजुकेशन आनी चाहिए. उसको मुझे कला किताबी किला नहीं बनाना, मुझे करिकुलम के थ्रू ही नहीं जाना. करिकुलम नो डाउट आएगा. देखिए लॉकडाउन के अंदर हमने देखा करिकुलम तो बच्चों ने ऑनलाइन भी कर लिया, विदाउट टीचर्स क्वेश्चंस पे भी कर लिया और यूट्यूब में भी करा दिया, और काफी टेक्नोलॉजी ऐप्स आ रही है उनसे भी हो गया. तो हमारा रोल कहाँ है? We are sporters, not teachers. हमारा जो एक्सपीरियंस है वो बच्चों को गाइड करेगा. We are guides, not खाली बोर्ड पे आए और क्लास लगाई और चले गए और बच्चों का टेस्ट ले लिया, हमने डिसाइड कर लिया कि तुम नलायक है, तुम होशियार है. We are nobody to decide this, क्योंकि बनाने वाले ने उसको किस लिए बनाया है वो हमें नहीं पता. हमें किसी को थॉमस एडिसन को नालायक घोषित कर दिया गया था, पर उसने क्या किया आज हम बैठे हैं तो उसी के बराबर बैठे हैं. लाइक हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं, उसी को देख पा रहे हैं. आई थिंक प्रैक्टिकल एजुकेशन शुड बी देयर. हमें बच्चे को मौका देना चाहिए, एंगेज करना चाहिए असाइनमेंट्स में. तो आई एम ट्राइंग दिस इन माय स्कूल.
जितना हो सकता है। Fantastic. We know that one size does not fit all, and I think sir has very eloquently explained that one size does not fit all. Sir has also very eloquently explained that teachers cannot be sage on a stage. They have to be guided by the side, and therefore take the. If you want to have a child-centric education, you need to change that paradigm and change it very quickly. Ma'am, my question, if I can just reiterate the question that the sir has just brought out, what is the role of the teacher now? How should the teacher modify herself or himself? The sir gave a directive and the teachers follow. If the teachers have to do this on their own, how would they go about doing this? For this, I believe first of all, the teachers, they need to create a community in the class, and then they have to be a guide, they have to be a facilitator, they have to be available, they have to be available all the time, not only during the school time, maybe beyond that, because when a student gets stuck in one of the, any query, then it's a teacher, or as said earlier in the previous session, that Google is always there. So someone has to be there, because Google has more or less become a teacher to them, and we, the physical teachers, certainly have to be upgraded to help them out. And this will only happen if we will keep upgrading ourselves and if we are flexible enough to motivate our children with the positive words. Thank you so much. So if I can redirect a question to you. One point that was brought out in the discussion that manager said earlier was technology is there, but technology does not replace. If you want to bring the true value out of a child-centric education, what is the role of technology, or rather what role will technology play to facilitate this for the teachers or for the institution? So basically, the way I see it is to have a student-centric education in our schools, there needs to be some grassroots level change in the way we evaluate the children. Right? The fundamental belief behind student-centric education is the child has to be evaluated based on his potential rather than a comparative evaluation between children. Evaluations in this country, be it at any level, be it class 10 board examination, class 12, higher educations, it's always comparative. मेरे बच्चे के 95% मार्क्स आते हैं, बट अगर वहीं बाकी बच्चे के 99% मार्क्स आ रहे हैं ना तो 95% ये तो कम है, कंपैरिजन. I'll give you an example. So I did my masters from Belgium, and over there we had a very different evaluation system. So I'm talking about MTech. So the final examinations in the university was only for 20 marks. It was an open book examination, and you would go to the hall, and the professor would pick a chit. You would pick a chit, and would have 2 questions, 3 questions. And you are allowed to do whatever, right? You bring your laptops in, you read about the answers, do whatever you want. You want to write something, you don't want to write something, you don't write it. The real examination would happen as a one-on-one chat with the professor. You would sit with us for 25 minutes and then assess what we had learned throughout the day. While asking questions, we were technical questions, of course, we were allowed to open our books, to get ये फॉर्मूला क्या था, ये चाहिए हाँ सर इसका ये पैरामीटर ऐसे होगा तो ऐसा था. So it was really based on, are we able to understand the content that is available to us rather than do we know the content, which is very different from the way things happen in this country. So technology as such can help us implement or modernize, help us implement and evolve our evaluation system, wherein we, instead of going for a more comparative analysis, we can figure out how the child has grown throughout the year. We can use AI modeling and machine learning to understand how the child has grown through the year, and has he reached
his potential and therefore evaluate the child. Fantastic. Thank you so much for those thoughts. Now, one question to all of you. If you were the education minister, you can answer it, I understand. If you were the education minister of the state, what is the one thing that you would do to bring about child-centric education? If I will be the education minister, I will focus on the interactive education system, not on the merit-based education system. फाइन, स्टूडेंट की जो चाह है बनना, देखिए मैं आपको बताता हूँ, हमें खुद को नहीं पता है, स्टूडेंट बॉन्ड हो जाता है यहाँ पे कि मार्क्स आए, यहाँ पे अप्लाई कर, यहाँ अप्लाई कर, ग्रेजुएशन करने के बाद आप देखिए बच्चे को जाना कहीं है, जाता है। मैं आपको बताता हूँ, पैरामिलिट्री फोर्सेस में डॉक्टर अब्दुल कलाम, आप अगर जाएंगे ना उनका इंटरव्यू, मेरे ब्रदर ने छोटे इंटरव्यू दिया तो उसको बाद में वहाँ विजिट कराया, मेरे ब्रदर का क्लियर नहीं हुआ तो उनको बाद में ये बोला गया कि आइए आपको हम अपना एक हॉल दिखाते हैं जिसमें उन्होंने जो फेलियर्स थे उनके फोटो लगा रखे थे और उसमें सबसे पहली फोटो डॉक्टर अब्दुल कलाम की थी। तो डॉक्टर अब्दुल कलाम वहाँ फेल हुए बिकॉज उसके वो बने नहीं थे, जिस चीज़ के लिए बने थे वो हम सब जानते हैं, ही वाज अ मिसाइल मैन। फाइन, तो आप किस लिए बने हो आपको पता नहीं है, हमारे स्कूल सिस्टम बताते नहीं है, हमारे कॉलेज सिस्टम बताते नहीं है, टीचर्स आर कमिंग फॉर देयर सैलरीज, फॉर देयर करिकुलम टू क्लियर द करिकुलम कि भाई ये पढ़ाना है, ये एग्जाम लेना है। मैं एक और मैं आपको बताता हूँ, आप भी अपने स्कूल में एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, सैटरडे मेरे स्कूल के अंदर बैग फ्री डे होता है, ठीक है, नो बैग्स आर देयर अलाउड और किसी बच्चे को ट्यूशन भी अलाउड नहीं है मेरे स्कूल में, ना ही कोई कोचिंग अलाउड है। और मेरे स्कूल में एक डीपी है और डीपी नहीं है, लेकिन स्कूल स्टेट लेवल पे अच्छे अवार्ड्स लेता है, ठीक है, जस्ट बिकॉज प्रैक्टिकली मैं बच्चों को बोलता हूँ बच्चे ये गेम आपने देखी, हर टीचर को असाइन किया है मैडम आपने ये गेम का थ्योरी प्रैक्टिकल सब आपको पता होना चाहिए और सैटरडे को आपको डिसाइड करना है कि एक हफ्ता आपके पास है, डिसाइड करिए कि सैटरडे को आप किस चीज में बच्चों को एंगेज करने वाले हैं, आप प्रैक्टिकली क्या करवाने वाले हैं या बच्चों को क्या असाइनमेंट ग्राउंड में देने वाले हैं या क्लासरूम में देने वाले हैं या आप बच्चे को टीचर बना के उसको YouTube पे उसका कुछ देने वाले हैं। तो बच्चे आज यूट्यूबर सब बनना चाहते हैं, इंस्टाग्राम सब करना चाहते हैं, तो क्यों ना हम ही उनको करा दें, उनका वो कीड़ा है वो हम दूर कर दें और उसमें हम उसको एंगेज कर दें कि बेटा करना है तो ऐसे कर। तो आई थिंक हम उसकी जो चाह है उसको बूस्टअप कर दें, लेकिन एक डायरेक्शन हम अपने एक्सपीरियंस बेस पे, अपने नॉलेज बेस पे हम दे दें और आई थिंक डायरेक्शन ही गाइड का काम होता है, टीचर का काम वही होता है कि गुरु द्रोणाचार्य ने 5 पांडवों को ट्रेनिंग दी, लेकिन सबको धनुष चलाना ही नहीं सिखाया। अर्जुन को धनुष चलाना सिखाया, भीम को गदा चलाना सिखाया, ठीक है, किसी को भाला चलाना सिखाया, बिकॉज जिसमें जो स्किल उनको लगा उसको एनहांस किया, उसको ट्रेनिंग दी उस तरह की। बट हम एक पर्टिकुलर थी और इसके लिए हमारे टीचर्स को एक इंटरेस्ट, सेल्फ इंटरेस्ट जनरेट करना पड़ेगा खुद के अंदर, और जिसमें हम जितने प्रिंसिपल्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, हम कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं टीचर्स को उस लेवल पे इंटरेस्ट उनका बनाने के लिए, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अगर टीचर्स को इंटरेस्ट हो जाए, बिकॉज टीचिंग वाइज क्लासरूम स्टडी की बात करें, यूट्यूब देख के जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो टीचर से कहीं ना कहीं आगे निकल चुके हैं, वो ज़्यादा अपडेट है हमारे से, तो हमें उसको थोड़ी नॉलेज है, उसमें यूट्यूब से देखा है या ऐप से पढ़ा है, बट हम अपने एक्सपीरियंस बेस पे उसमें प्रैक्टिकल इन्वॉल्व करके, असाइनमेंट्स इन्वॉल्व करके हम उसको बच्चे के लिए ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं और ज़्यादा तब रियल स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन बन जाएगा बच्चों के लिए जो स्कूल है। ठीक है सर, थैंक यू सर। आपने जो क्वेश्चन पूछा कि आप एजुकेशन मिनिस्टर होते तो आई वेरी प्राउडली से कि मुझे एजुकेशन मिनिस्टर बनना ही नहीं है। क्वेश्चन इज आप अपने क्वेश्चंस को बीइंग अ लीडर, इफ यू आर अ लीडर एंड लीडरशिप क्वालिटीज आर इनसाइड यू, तो देयर इज नो नीड टू एनी टैग कि आपको मिनिस्टर बनना है। व्हाट आई हैव डन ऑन माय बिहाफ ऑफ माय स्टेट एज आई एम फ्रॉम उत्तराखंड, सर शायद जा चुके हैं जो बता रहे थे जोशीमठ और रुद्रप्रयाग और उत्तराखंड के ऊपर के पहाड़ी गाँव के बारे में। वहाँ टेक्नोलॉजी नहीं पहुँच पाती है या वहाँ के बच्चे आके बोलते हैं कि वो गरीब हैं, उन्हें फीस माफ़ कर दी जाए, या रूरल एरियाज जितने भी हैं हिली एरियाज के, उन पे काम नहीं हो रहा है। नथिंग इज लाइक दैट नाउ डेज। नो हिली एरिया इज
we can say that it is poor area or it is not good developed area in technology. Because now today, अगर आप केदारनाथ में फोन कर सकते हैं, तो आप कहीं भी फोन कर सकते हैं. क्योंकि उत्तराखंड is not that much bad because I am there from last 15 to 16 years and in the education field only. And what I have observed, I am the youngest leader from my state. I am the youngest entrepreneur who is having my own school also and working as a principal also in another school, and I am having my 2 other branches also in the same state. That's not because of कि मुझे उस चीज को आता कैसे करना है. मैंने ये सोचा मुझे ये करना है और ये बिलीफ मुझ में मेरे शायद टीचर्स ने ही डाला हो. तो विदाउट टीचर्स अगर मैं एजुकेशन मिनिस्टर हो भी जाती और मैं नहीं भी हो तो भी मैंने एक लेटर लिखा जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर सर हैं उनको. उसमें एक क्वेश्चन था मेरा, मैंने आदरणीय से स्टार्टिंग नहीं की थी. मैंने उनसे एक क्वेश्चन पूछा था, आपने कितनी बार एजुकेशन से जुड़े हुए टीचर्स को, गवर्नमेंट स्कूल को, प्राइवेट स्कूल्स को, उनके प्रिंसिपल्स को और उनके टीचर्स को कितनी बार बुलाकर के उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में पूछा. बिकॉज हमें बोला जाता है सिलेबस कवर करवा दीजिए. लाइक सर ने बोला कि हमको सिलेबस कवर करवाना होता है. टीचर्स बुरे नहीं होते हैं. टीचर्स नहीं चाहते कि उनका बच्चा ना सीखे, बट टीचर्स फोर्स्ड होते हैं. फोर्स्ड पुश अप होते हैं, यू हैव टू कंप्लीट द सिलेबस. क्यों इतने लेसन्स नहीं हुए अभी? हो जाने चाहिए थे. We ask this question from our teachers, like what I have done. और मैं सबसे अच्छा मुझे लगता है बिकॉज अगर डेली मेरे टीचर्स मुझे सुनने के लिए 5 मिनट देते हैं, इसका मतलब वो सीखने के लिए तैयार हैं. जब स्कूल ऑफ हो जाता है, छुट्टी हो जाती है, डेली आई यूज्ड टू सिट विद माय टीचर्स. इट्स माय ओन आइडिया, इट्स माय ओन बिलीफ कि अगर मैं 5 मिनट इनकी प्रॉब्लम्स आज की सुन लूंगी इंस्टेड ऑफ ओनली पीटीएम का वेट करेंगे अगर हम कि अच्छा क्या प्रॉब्लम थी किस बच्चे में, तो शायद हम रेगुलर जो एक कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन करते हैं उसमें हम पीछे रह जाएंगे. तो डेली अगर मेरे टीचर्स मुझे बता देते हैं मैम इस क्लास का इस बच्चे का ये फीडबैक है, इस क्लास के इस बच्चे का ये फीडबैक है, हम कोशिश कर रहे हैं बट पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे हैं. बिकॉज नो टू इंडिविजुअल्स आर अलाइक, लाइक आवर चाइल्ड साइकोलॉजी सेज और साइकोलॉजी सेज नो टू इंडिविजुअल्स आर अलाइक. हम यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं हम में से कोई भी एक दूसरे के जैसा नहीं है. सब अपनी अपनी यूनिक पर्सनैलिटीज लेकर के यहाँ बैठे हुए हैं. तो इसी तरीके से जो 500 हजारों बच्चे हमारे पास होते हैं वो कैसे एक जैसे हो सकते हैं. तो मैं अपने एजुकेशन मिनिस्टर से हमेशा यही बात करती हूँ. इंडिविजुअली वो मेरे नाम से ही परेशान हो जाते हैं कि वो मिसेस कोची आ गई हैं तो कोई एजुकेशन रिलेटेड क्वेश्चन होगा. तो मैं उनसे यही पूछती हूँ कि आप बुलाइए, बैठाइए, आप अपने जो व्हाट वी आर डूइंग, अच्छी बात है यहाँ पे नहीं है. हमेशा क्या होता है किसी न किसी नेता को बुलाते हैं. We call politicians for the awards कि वो हमें ऑनर करें. But we are already facilitating. We are the facilitators. अगर किसी अवार्ड फंक्शन में, टीचर्स अवार्ड फंक्शन में, अभी 20 तारीख को नारी शक्ति सम्मान समारोह है उत्तराखंड में जिसमें मैं इन्वाइटेड हूँ, but I deny for the payment. I said why I should give payment for the award? Why are you giving this? Then education minister himself said, please don't ask anything from her, please. Because अगर हमें पैसा देकर के अपने लिए अवार्ड लेना है तो where we are working. आपका उत्तराखंड में नाम बोलना चाहिए कि अगर आप किसी से पूछते हैं तो अगर आपको ये लगता है कि ये अवार्ड इस नाम से इस बंदे को दिया गया है, पीछे कारण पता होना चाहिए क्यों दिया गया है. What she has done for the students, what she has done for the teachers, what she has done for the education system, not only for my own school, because each and every school, each and every child who is studying in Uttarakhand, in my state or in my city, because उस पर मैं काम कर सकती हूँ basically in Dehradun. तो why these kind of problems are facing by my teachers? Why these kind of problems are facing by my parents? Why these kind of problems facing by me as a principal, as a director, as an owner? Why? So are you having any answers for my questions? This is the question every month with the education minister from my side. So this I'm doing. I don't want to be education minister. So this would be my answer. Well, we'll honor your wish. I will never make you the education minister.
But please continue doing the good work that you have been doing. Sir. Coming back to your question, right, as an education minister, if you want this, I think, so if you look at the Western world, with Europe, US, student-centric education is becoming a big buzzword over there. And one of the reasons why they have been able to do it so efficiently is because there is no central board in these countries, right? Every school is free to design their own curriculum, to design their own speed. But over here in this country, we have a very strict oversight by respective boards on what has to be taught, how it has to be taught, and what is the material that you want to use in school, right? As long as there is such a strict control over these things, student-centric education cannot happen. And so, apart from evaluation, apart from teacher trainings, apart from the very thought process that needs to change among all stakeholders, I think the first thing that needs to be done is the schools should be given the freedom to teach what they want to teach or what they think should be taught. Okay, a general framework everybody should have. That's okay. That you should have some kind of a guide, but not a strict dictatorial control over what is being taught. Right? In the end, they have to give their board examination, right? So, anyways, you can compare which school has done what, right? And that is the reason why board examinations were held in the first place, right? And even now, I think even those are not required because, anyways, the board exam scores, sorry to say, don't hold any water anymore, right? Even now with the CUT exam, even for art students and commerce students, they have to give an entrance exam to get into college. So why are we holding board examinations? Because in the end, your final score that matters is what you do in your entrance examination. Right? So you keep doing that. I think that's a good step. You keep doing that and let the school nurture the children based on their potential from childhood so that they can do well and go to whatever good colleges and so on and so forth. Without autonomy, they can never be child-centric education. I think you have been very able to answer that question. Thank you very much, sir. Ma'am. I agree to whatever they have said somehow, and I'm really impressed the way ma'am has also said. But I feel that somewhere we already are the education ministers in our own schools. We are ministering what has to happen, and whatever we dream for, we definitely try to chase that dream by inculcating that the similar kind of thing in our school. And somehow we all must agree that we have been able to chase the dreams and we have been able to see what we have been looking for in our children. But we certainly fail somewhere in board classes, where we have to also run after them that you have to study, you have to get good scores, because there are various pressures whether we agree or not. Thank you very much, ma'am. So here we are, pretty much at the end of the final panel discussion. Very succinct, very crisp answers, thank you very much. Very strong answers, thank you very much for that too. One thing we've realized is the definition of child-centric education, the child-centric model of education needs to be reworked in our minds and in our pedagogies. We know that there is a lot of ripple effect if you want to implement true child-centric education. And the ripple effect is seen in terms of assessments, in terms of teacher development, in terms of leadership roles. Strong point that will really come out is that you don't need a designation or a position to instrumentalize change. You can be the change you want to see in the world, and you can do it from wherever you are. And we thank you for those thoughts. So what is child-centric education? Can we achieve it soon? And if we need to achieve it soon, what do we need to do? Are questions that are still thrown open to all of us. I take the opportunity to thank all the panel members for sharing their thoughts, their vision, and their ideas. I hope some of these thoughts will stay with us and we will be able to bring about small changes in education for the better. Thank you so much. Thanks a lot, Mr. Raymond, for keeping us so well threaded. Thanks once again. So we come to the end of the session. Technomedia to please come on the stage and give token of memento to our panelists. Services Limited. A big round of applause.
Moga. Dr. Lalita, Principal Hindu School, Dehradun. A big round of applause for ma'am for such bold efforts which she is taking in our school and across the state and city. Can we have